हेलो। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कशन कर रहे थे। सेकंड चैप्टर है ये 12th का। इसके अंदर मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन इससे पहले समझाया था। डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो क्या था? फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक के अंदर you have observed after fertilization zygote is formed, that is the zygote, and PEC is also formed and degenerate the antipodal cell and synergids. Zygote formed at micro pillar and another end is shell and okay. You know, in sexual reproduction there are three events. First is pre-fertilization event. In pre-fertilization event, microsporogenesis, megasporogenesis, transfer of the pollen grains, male gametophyte by means of the pollination. After that, double fertilization process, fertilization event, and the third event is post-fertilization event. Post-fertilization event. Post-fertilization event includes development of endosperm, development of embryo, and fruit and seed formation. These are the events, processes that includes in post-fertilization event. So first of all, we have to discuss about the development of endosperm. How to endosperm is developed. Endosperm development of endosperm. What is endosperm? You know, this PEC undergo mitotic division and form multi-celled nutritive tissue that is known as the endosperm. Okay. After that, how to this multinucleated nutritive tissue is formed? This tissue means endosperm formed by three means. Endosperm formed from the PEC. This PEC means we can say fertilized embryo sac. In fertilized embryo sac there is zygote and PEC that formed by three means. First means is free nuclear type of the endospermic development. Free nuclear type. In free nuclear type of the endospermic development, the nucleus of the PEC undergo mitotic division and form free nuclei at the center of the embryo sac.
also developed after the formation of endosperm. Now, this free nuclear endosperm can be seen in कोकोनट. कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है, हम कह सकते हैं कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर. So we can say, what is coconut water? Coconut water is nothing, that is the free nuclear endosperm. जो कोकोनट वाटर होता है वो एक्चुअली में क्या है, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. ओके, द zygote is also formed and develop the embryo. This form the embryo and that is the endosperm. So this is a free nuclear type of the endospermic development. There is nuclear divide freely. यहाँ पे जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है वो फ्रीली डिवाइड हो रहा है. The second type of the mode of the endospermic development, that is cellular type of the development. Cellular type. In cellular type of the development, there are first of all two cells are formed. These two cells are formed, and then multi-cells are formed. Multi-cell are formed. Zygote is also develops into embryo. Now the structure is formed as multi-celled nutritive tissue. That structure is known as the endosperm. This endosperm have reserve food materials, and this endosperm provide the food to the developing embryo. That is a cellular type of the endospermic development. The example is white kernel of the coconut. White kernel of coconut. That is the example. This is the first type and this is the second type. There is third type is also take place. In third type of the endospermic development, the PEC undergo mitotic division and form two cells. But the nuclei of these cells freely divide. And after that, these are surrounded by cell wall and form the cellular tissue, multi-celled nutritive tissue. There is zygote or embryo. So that is also endosperm. That is the intermediate condition. That is a cellular type of the division, equal mitotic division. There is free nuclear division, but this is the unequal division. There are both type of the free nuclear division and cellular type of the division are also take place. So this type of the mode of the endospermic development as considered is intermediate condition or halovial type or halovial type of the endospermic development. So we can say there are three type of the endospermic development take place in the
angiospermic plant. The example of the alluvial type of the endospermic development, that is the monocot plants. मोनोकोट प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलता है alluvial type of the endospermic development. So you know endosperm development proceed embryo development to ensure nourishment for the developing embryo. यहाँ जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है, क्योंकि एम्ब्रियो को जो नरिश करना है इसके द्वारा एंडोस्पर्म के द्वारा। और एंडोस्पर्म की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, दे हैव द न्यूट्रिशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल्स होती है वो न्यूट्रेटिव नेचर की है। सो ये दीज सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो. You know, before the development, zygote gets the nutrition from degenerating anticoral cells or synergids. After that, the second event under endospermic development, that is known as the under post fertilization event, that is known as the development of embryo. In post fertilization event, how to embryo, development of embryo, how to embryo form in flowering plant. You know, in embryo sac, fertilized embryo sac at the micropillar end, zygote is formed. This zygote is diploid. So, at the micropillar end, zygote in most of the flowering plant, zygote divides only after certain amount of the endosperm, and the embryo development start at the micropillar end from the zygote or of the embryo sac. एम्ब्रियो सेक के अंदर माइक्रोपिलर एंड पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ज़ाइगोट से माइक्रोपिलर एंड की तरफ इसका एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ज़ाइगोट माइटोटिकली डिवाइड, माइटोसिस डिवीजन होगा और ये 2 सेल्स फॉर्म करेगा। द 2 सेल्स जो बनेगी दैट आर, हमने 2 सेल बनाया, ये एक सेल बन गया और एक दूसरा सेल बन गया। चलिए इसको इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे 2 सेल बना है। अब इनका आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है। इसको हमने ब्लू कलर से दिखा दिया। दैट इज द, दिस इज द टुवर्ड्स माइक्रो pillar end, and the second one is towards chalazal end. This one is known as the basal, and this one is known as the terminal cells develops embryo, so this is known as the embryo cell. Embryo cell, and this one is known as the suspensor cell, because the basal cell form suspensor. Now what happened in basal cell, the transverse division is take place. Transverse division take place in the basal cell, and vertical division take place in the
टर्मिनल सेल। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा किसके अंदर, बेसल सेल के अंदर। बेसल सेल ट्रांसफरली डिवाइड and the terminal cell divide vertically that is the T-shaped structure is formed, this T-shaped embryo. Now terminal cell further divided transverse division by means of the transverse division. So this T-shaped embryo formed four cell. Four cell, and after that this form 8 cell. This form 8 cell. That is known as the octate stage, octate embryo, and this is quadrate embryo. These T-shaped embryo up to quadrate embryo, these are called proembryo. ये क्या कहलाएंगे? प्रोएम्ब्रियो है। ये सब प्रोएम्ब्रियो हैं। यहाँ पे हम इसका सेल का डिवीजन भी हम दिखा सकते हैं, और इसको जो है सस्पेंसर जो सेल्स हैं ये भी बनना शुरू हो जाती हैं। तो सस्पेंसर सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है। इधर ऑक्टेट स्टेज बन जाता है। ऑक्टेट स्टेज, क्वाड्रेट स्टेज एंड टी-shaped स्टेज रिप्रेजेंट द प्रोएम्ब्रियो. After that this is formed सस्पेंसर. ये सस्पेंसर बन जाता है. सस्पेंसर. In suspensor there are two cells are remarkable. This cell and this is the cell. This cell and this cell. The first is known as the hastoreal cell. इसको बोलते हैं hastoreal cell. And this is known as the hypophysis cell. Hypophysis. ये कौन सा है? हाइपोफाइसिस सेल है. ये हाइपोफाइसिस एंड हास्टोरियल सेल क्या करती है? इट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द न्यूसेलस. ये हास्टोरियल सेल का जो नेचर होता है ये क्या करती है? एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम न्यूसेलस से ये क्या करती है? न्यूसेलस से क्या करेगी? फूड को एब्जॉर्ब करती है. कौन? हास्टोरियल सेल absorb the food from the nucellus. In suspensor there are 6 to 10 cells are present, and now the embryo is formed in the globular shape, and this is known as the globular embryo. ये क्या कहलाएगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहलाएगा. ग्लोबुलर एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा? 4,
8 and 16 cells are formed. There are 16 cells are formed. This 16 celled embryo, and this embryo is known as the globular stage. ये कौन सा स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा? ग्लोबुलर स्टेज को रिप्रेजेंट करता है. ग्लोबुलर stage. This is the globular stage, and after the globular stage, this embryo change into heart-shaped embryo. In heart-shaped embryo, the suspensor as it is, suspensor का सेल as it is रहेगा. हम इसमें कितना सेल बनाएंगे? 6 to 10 सेल्स बना देंगे. Okay, now the embryo cells that is divide and form heart-shaped embryo. Heart-shaped embryo. This is the heart-shaped embryo. These are the cells, group of the cells. Okay, that is the heart-shaped embryo. Okay, after that the mature embryo is formed. Now the last diagram that will be mature embryo. मैच्योर एम्ब्रियो का हम डायग्राम और बनाएंगे. इसके अंदर मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर भी वही हास्टोरियल सेल को हम रिप्रेजेंट कर देंगे. दिस इज द हास्टोरियल सेल एंड दीज आर द cells of the suspensor. Hastoreal cell is the part of the suspensor cell. और जो एम्ब्रियो का जो शेप होगा वो कोटाइलडॉन को रिप्रेजेंट करेगा. कोटाइलडॉन को रिप्रेजेंट करेगा. इस तरीके से बन जाएगा. यहाँ पे जो इसका ये शेप बना है इसको हम थोड़ा सा और दूसरे अच्छे से बना देते हैं. इसको आपको एम्ब्रियो बन गया. इसमें यहाँ ये दोनों कोटाइलडॉन हैं. कोटाइलडॉन को रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इस कोटाइलडॉन के अंदर, और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा. ये दो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी. इसको बोलेंगे हम प्लूमूल, और दिस इज द रेडिकल. ये क्या होगा? रेडिकल. रेडिकल और प्लूमूल भी इस एम्ब्रियो के अंदर बन जाते हैं. ये कौन सा है? हास्टोरियल सेल है. और ये कौन सा है? हाइपोफाइसिस है. ये पूरा कौन सा है? सस्पेंसर है. और ये पूरा कोटाइलडॉन्स है. दोनों कोटाइलडॉन्स के अंदर अब इसको हम एक मैच्योर एम्ब्रियो बोल सकते हैं. पूरा सेलुलर मास है ये, और एक मैच्योर एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट करता है. इस मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर हमने हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल को पहचानना है. तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा एक दूसरा रूप दे देते हैं, और उसको हम एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो कि प्लूमूल और रेडिकल फॉर्म करते हैं उनको हमने पहचानना है इसके अंदर. तो इसको बच्चों ये जो है यहाँ पे हमने दिखाया, ये प्लूमूल को शो कर रहा है. जो स्ट्रक्चर है प्लूमूल को शो कर रही है. और दिस इज द सिलेंड्रिकल जो फॉर्म है. दिस इज रिप्रेजेंट एज ए हाइपोकोटाइल. ये किसको? हाइपोकोटाइल को शो कर रहा है. एंड दिस इज द एपिकोटाइल. In epicotyle, plumule is formed and there is a root cake.
ये क्या है, रूट केप है, और रूट केप के इधर साइड में ये क्या बनता है, रेडिकल। ये रेडिकल है, रेडिकल एंड प्लूमूड। ये क्या है, प्लूमूड है। ये एक डाइकोट एम्ब्रियो है, इस मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो है। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं और इसके अंदर हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटाइलडॉन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ cotyledon, that is known as the epicotyle, and epicotyle develops into plumule, and the portion of the embryonal axis, the cylindrical portion of the embryonal axis below the level of the cotyledon, that is known as the hypocotyle, and which develop into radical. Okay, that is the mature embryo in the flowering plant. So there is you see here how to embryo develop from the zygote through mitotic division, through different changing structure. ठीक है, तो आपको ये जितना भी डायग्राम मैंने बनाया था, इनको सिक्वेंशियल वे में एनसीईआरटी बुक में भी ये डायग्राम्स बने हुए हैं। सीक्वेंशियल वे में बना करके आपने समझना है कि एक जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है। तो दीज आर द टू इवेंट्स अंडर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ द सीड इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। समझ में आया आप लोगों के? ठीक है, चलिए।